In moments like these, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. Moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Oh, tell him you love him. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Singing, I love you. Singing, singing, I love you, Lord. I love you. Foundation that has to be laid in life, and I'm talking about that कुछ today. बुनियादी बातें होती हैं जिन्हें हमारे अपनी जिंदगी में जो अभ्यास करना You चाहिए, know, that is important for faith to work. वो विश्वास काम करने के लिए बहुत जरूरी है. Only when those foundational factors are right, then faith has a conducive atmosphere to work. जब वो बुनियादी बातें बिल्कुल ठीक तरह से होती है तभी जो है विश्वास सही रूप से काम करता है. And these people, that's the problem. They come to church, they hear the word, and they're glad when they hear it and they receive it and all of that. But they have neglected the foundational factors, therefore have no root and therefore don't endure for a long इन time. लोगों में जो यही समस्या है, वे कलीसिया आते हैं, आनंद से जो है प्रचारों को सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, ले लेते हैं, थोड़े समय के लिए तो रहता है पर बहुत समय तक वो नहीं रह So पाता. what happens? तो क्या होता है? They come and hear and gladly वे receive आकर it. सुनते हैं, आनंद से ग्रहण करते But हैं, there is a problem hidden underneath the earth. You don't see it on the outside. There is something of a problem inside. पर भूमि के नीचे एक समस्या हो रही है जो छिपी हुई है. वे उसके बारे में कुछ करते नहीं है, कुछ सुधारते नहीं है. Something deep inside there is a भीतर problem. गहरे में जो है कुछ समस्या No है. proper foundation is there. एक सही बुनियादी बात वहां नहीं You है. can't just look and tell. वे उसे देखकर नहीं बता सकते. It looks like everything is all right. ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा But है, there's a problem inside. पर भीतर एक समस्या है. When does that problem begin to show some symptoms on the outside? कब ये समस्या बाहरी रूप से सिम्टम्स दिखाने लगती It's है? like sickness, you know. It's when it's on the inside, you don't sometimes see the symptoms immediately, but when certain things happen, you can see it. देखिए, बीमारी की तरह है. जब कोई बीमार पड़ जाता है तो बाहर तो तुरंत कुछ दिखता नहीं है, जब अंदर काम करने लगता है तभी भारी रूप से दिखता है. When certain things happen, it triggers certain things in the body, and then you say, oh boy, this happened, and then you start looking into it, there's a bigger problem जब कुछ inside. चीजें होने लगती हैं तो क्या होता है कि शरीर के अंदर जो है अचानक कुछ बदलाव आने पर ही जो मालूम चलता है कि अरे भाई शरीर में कुछ So गलती है. it's like that, very much like that. उसी तरह सब कुछ ये हो रहा And है. the Bible tells us we don't have to make up anything. The Bible itself tells us what it is. बाइबल भी हमें ऐसे कहता है, हमें कुछ मेकअप करने की जरूरत नहीं है. बाइबल खुद ऐसा ही कहता है. When affliction or persecution ariseth for words' sake. वचन के कारण जब कोई पीड़ा आती है या फिर कोई सहना पड़ता है, Immediately they are offended. तुरंत जो है उन्हें रखवाली होती है. You see, these are people that have believed, that have accepted Jesus as Lord and Savior. They come to church, hear the word. देखिए, ये ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के कलीसिया में आते हैं, उसके अनुसार चलते हैं. But when affliction and persecution comes, they can't even stand it for a little time. पर जब कोई पीड़ा आती है या समस्या उठ खड़ी होती है, थोड़े समय तक भी नहीं खड़े रह पाते.
See, when you got a problem in the body, even a little amount of stress causes everything to trigger देखिए up. आपके शरीर में थोड़ी सी कोई समस्या आए तो थोड़ा भी आप सहन नहीं कर पाते हो। You get a little wet, you get sick. थोड़ा सा आप गीला हो जाओ तो बीमार हो You जाओगे। get cold, drink cold water, you get sick. ठंडा पानी पियो तो तुरंत जो बीमार हो Why? जाओगे। Because there's already something wrong, and these things, as soon as it happens, immediately it makes you क्योंकि sick. ये बातें जो है पहले से कुछ गलती है अंदर से, इसलिए थोड़ा सा कुछ पालो तो तुरंत बीमार हो जाते Isn't हो। that right? है कि नहीं? That's because there is something basically weak ये inside. इसलिए है कि भीतरी रूप से कुछ बहुत ही निर्बल है। So, spiritually, it is saying that when persecution arises or when affliction arises, for the word's sake, आत्मिक रूप से कहा जाए तो यहाँ कहा गया है कि जब कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, पीड़ाएं आती हैं, immediately they are offended. तुरंत जो है वो ठोकर खा जाते हैं। They don't even last for 5 minutes. वे 5 मिनट तक की नहीं रुक पाते। As soon as something happens, persecution or affliction happens, immediately they are offended. जैसे ही कोई पीड़ा या परेशानी आती है, तुरंत वो ठोकर खा जाते हैं। This morning I was sharing the story that comes at the end of this chapter. आज सुबह जो है इस पद्धति में जो आखिरी में जो कहानी आता है उसके बारे में बात कर रहा था, Isn't that right? है कि नहीं? Jesus is taking them to the other side. यीशु उन्हें दूसरी ओर ले जाता है। And going to the other side, on the way, there is a storm. दूसरी ओर जाते वक्त जो है रास्ते में एक बहुत बड़ी तूफान आ जाती है। Immediately. तुरंत। You see, now only they heard of one of the best sermons. आज ही जो है सबसे अच्छा प्रचार उन्होंने सुना है। Jesus was teaching them in parables and giving them the meaning, and oh, they've been to Jesus' revival यीशु meeting. जो है उनको दृष्टांतों में बता रहा था, उनका अर्थ बता रहा था। मुझे लगता है बहुत बड़ा जागरण उनके अंदर हुआ Probably होगा। whole day seminar. शायद पूरे दिन का एक सेमिनार हुआ होगा। He really pepped them up with all that truth. उन सच्चाइयों से सचमुच उत्साह में शायद वो भर गए होंगे। Wonderful truth. बहुत ही अद्भुत सी सच्चाइयाँ। 4th chapter is an amazing chapter. Mark's Gospel chapter 4 is an amazing chapter. I've preached verse to verse, verse by verse. from it. मरकुस चौथा अध्याय बहुत ही अद्भुत सा एक अध्याय है। मैंने एक एक वचन लेकर प्रचार किया उसमें। And he finished teaching and he says, let's now go to the other side. प्रचार करने के बाद वो कहता है कि चलो उस तरफ हम They चलते हैं। got on the boat and he took a pillow and went to sleep. नाव पर चढ़े और उसे तकिया लेकर पीछे सो लिया। He is not very poor. He sleeps with a pillow. देखिए वो उतना गरीब नहीं है, तकिया लेकर तकिए के साथ ही सोता है। Because some people say he didn't even have a place to lay his head. I want to tell you he had a pillow and a place to कुछ lay his लोग head. कहते हैं कि उसके पास जो सोने के लिए जगह भी नहीं था। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ कि उसके पास तकिया भी था, जगह भी था। Quite comfortably. बहुत ही सुविधापूर्वक सो रहे थे। Don't worry. In those days he used चिंता pillows. मत करो, उन दिनों में उसने तकिया I उपयोग किया। remember not using pillows. मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने तकिया उपयोग नहीं किया Like I था। said, in our house everything was first come first serve basis, and there's only few pillows, and you better scramble for it, otherwise you don't get one. मुझे अच्छी तरह याद है तकिए की कमी होने के कारण जो है घर में कहा जाता था कि जो पहले सोने के लिए आएगा उसको तकिया मिलेगा, नहीं तो उसको तकिया नहीं If मिलेगा। one or two tears up, it'll be some time before they get another one, and boy, you better be careful because there's only that many. You get it ahead of time. अगर एक दो फट जाए तो जब तक दूसरा आ जाता है तब तक जो है हमें उसी से गुजारना पड़ता था। So I'm used to that. देखिए मेरी ऐसी भी आदत थी। But Jesus is carrying a pillow with him, पर यीशु अपने साथ एक तकिया लेकर घूमता and है he's sleeping there. और वो वहाँ सो रहा है। And as soon as the storm and the wind started showing up, immediately look at their reaction. देखिए जैसे ही बहुत बड़ी हवा और तूफान उस झील में जब आने लगी, तुरंत देखिए वो कैसे बर्ताव करते हैं। They say, Master, carest thou not that we perish? कहता कि हे गुरु, हमारी चिंता नहीं करता क्या हम डूबे जा रहे हैं? You mean to say that these people have heard the preaching of Jesus, yet there is a foundational क्या तुम problem. ये कहते हो कि इन्होंने इतना बड़ा अच्छा संदेश सुना है फिर भी एक बुनियादी कमजोरी इनके अंदर That है? gives me some comfort. थोड़ा तसल्ली मुझे मिलता है उससे। That sometimes when people hear us also, they hear us and they like the jokes and they like the way I talk maybe and they like the sermon maybe, but they don't really go to the foundation. देखिए जब मैं यहाँ पर जब कोई नए लोग आते हैं, सुनने के लिए आते हैं, तो मेरे जो मजाक हैं, जो मेरी बातें उनको पसंद तो है, पर बुनियादी चीजें छोड़कर चले जाते So हैं। they don't really benefit from it. तो सचमुच उससे वो लाभ नहीं पा पाते। There were people sitting under Jesus that did not benefit. देखिए ऐसे भी लोग हैं जो यीशु के पास बैठे थे जिन्होंने लाभ नहीं पाया था। He was preaching them so elaborately about how the kingdom works, and now they've lost it all. In one moment, just one storm and one wind blowing, forget about all that, the sowing, the seed and all of that. Forget about all. Don't you care that we perish?
They are talking just like the man on the street. क्या आज बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने सुन रखा था, अच्छा प्रचार यीशु ने किया था, पर थोड़ी ही देर में जब बहुत बड़ी तूफान और बहुत बड़ी हवा चली झील में, तो तुरंत वो चिल्लाकर कह रहे हैं कि हे गुरु, चिंता नहीं कि हम डूबे जा रहे हैं। The storm took all the stuff. तूफान सारा कुछ उनका ले गया। And only thing left is their unbelief, because that unbelief has become their foundation since a long सिर्फ time. उनका अविश्वास वहां रह गया था, और ये अविश्वास जो है बहुत दिनों से उन्हीं के अंदर था। And the fear has been their foundation for a long time in their life, और it उनकी seems जिंदगी like. में बहुत दिनों से जो है ये डर बुनियादी तौर से That नीचे has been था। a part of their personality and their nature, and they come from backgrounds in which they feared and filled with anxiety. And you know, some of these men are fishermen, and but still, you know, they're like that. Their उनके nature is like व्यक्तित्व that. में जो है ऐसा स्वभाव पहले से ही था। ये मछुआरे थे, तो फिर भी इनके अंदर जो ऐसे अविश्वास और डर की And बातें it's थी, showing up. और तुरंत वो दिख पड़ता है, Because they have not taken that foundation out and laid this new foundation. क्योंकि उन्होंने उस नींव को वहां से हटाया नहीं और नई नींव को वहां पर नहीं बिछाया। They have not removed that old foundation and they're not building on this new उन्होंने उस foundation. पुरानी नींव को हटाया नहीं और इस नई बात को वहां पर नहीं See, you बताया। cannot build a life of prosperity and success and increase with an old foundation of unbelief and doubt and anxiety and worry and देखिए, पुरानी fear. नींव जो तुम्हारे अंदर है, जो कमजोरी है, जो विश्वास है, जो डर है, जो अविश्वास है, उसे हटाए बिना आप सफलता नहीं पा सकते, नई चीजों को नहीं बढ़ If you सकते। don't deal with your fears and your worries and your anxieties, and if you don't deal with that temperament, that basic temperament that you've had for so many years, and if you don't deal with it by the grace of God and lay a new kind of foundation, I tell you, my friend, there is no scope for जब a तक great जो है increase. आपकी पुरानी चिंताएं, पुरानी बातें, पुरानी कमजोरियां, पुराने अविश्वास, पुरानी सभी बातें तुम वहां से हटा नहीं देते हो और नई चीजों को जो है वहां पर नहीं बिछाते हो, तब तक जो है आप सफल नहीं हो सकते। Hello, are you there? क्या आप हो? It becomes very difficult. बहुत ही मुश्किल बन जाता है। You can't keep that and live a successful life. आप उन्हें रख कर एक सफलतापूर्वक नहीं जी सकते हो। You can't be the same person basically that you were, and now be blessed. जैसे आप पहले थे उसी व्यक्तित्व में जो है रहकर परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा Because सकते, everything works by sowing and reaping. क्योंकि सब कुछ जो है बोने और काटने के द्वारा ही काम करता If है। you want to get good results out of the sowing of the word, then you got to prepare your heart, get the foundations right, and get all these environmental factors taken care of so that there will be maximum results when अगर the आपके harvest अंदर comes बोए गए इस up. वचन के द्वारा अगर आपको अच्छे नतीजे चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो अपने हृदय को ठीक करना होगा, अपने बुनियादी सभी चीजों को जो है ठीक करना होगा, पर्यावरण की सभी चीजों को आपको ठीक करना होगा, तभी जो आप अधिकतम कटनी आप You पा got to सकते deal हो। with the inside. भीतरी रूप से आपको ठीक करना होगा। You see, it's giving me an indication that they have gone to some church somewhere and they have learned how to behave on the outside. Gladly receive it. They're showing some gladness and smile and lift up your hands and all their behavior they have learned, यहाँ पे जो है इसके द्वारा ऐसे चिन्ह भी बताए गए हैं कि वे कलीसिया में जाते तो हैं, कुछ कलीसिया में जाकर क्या होता है कि वे खुशी से, आनंद से जो सभी चीजों को पाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। It's a learned behavior. देखिए, व्यवहार उनका ऐसा सीखा गया है। Jump like this, dance like this, clap like this, lift your hand like this. So after a while you go to the church and you learn how to कहते jump. हैं ऐसी ताली बजाओ, ऐसे कूदो, ऐसे आराधना करो, ऐसे अपने हाथ को उठाओ, ऐसा करो, वैसा करो, सब कुछ वहाँ सिखाते हैं, सब ठीक होता है। When the guitar starts giving that rhythm, you just go jump, कहते हैं जब गिटार का रिदम दिया जाता है तो आप ऐसा कूदना शुरू कर दो। It's just a learned behavior. देखिए, सीखा गया एक व्यवहार है। It is not, it's just because everybody does it, you just learned it. ये इसलिए नहीं है कि सभी लोग उसे करते हैं, आपने भी सीख लिया है। And it seems like that's what has happened to these people. They've gladly received the word. They've learned the mob behavior. ऐसा लगता है कि वे जो है गुट में रहने के कारण पूरी तरह से उन्होंने सीख लिया है। But they have not really paid attention to the inside. They have paid attention to how they look on the outside so that they merge with everyone successfully and look like everyone outside, but they have not paid any attention to the inside. पर क्या होता है कि ये बाहरी रूप से इन्होंने खुशी से, आनंद से सब कुछ तो ग्रहण कर लिया है, बाहर से दिखने में खुश हैं, दिखने में बिल्कुल आनंद से रहते हैं, पर भीतरी रूप से इन्होंने कुछ ठीक नहीं किया है। It's important for them to look like all others and be accepted by all others and to behave like all others, to clap their hands like all others and to be jumping like all others, but
They didn't pay any attention to what is happening on the देखिए, inside. वे चाहते हैं कि दूसरों के साथ जब उन्हें मिलाकर देखा जाए तो दूसरे के साथ बिल्कुल मिलते जुलते हो, दूसरों की तरह जो तालियां बजाते हैं, दूसरों की तरह कूदते हैं, दूसरों की तरह आराधना करते हैं, हाथे उठाते हैं, पर भीतरी रूप से वैसे की वैसे ही है। Jesus told the Pharisees that's what their problem was. He said, your cup is clean and painted on the outside, cleaned up on the outside, but inside it's dirty. इसीलिए जो परमेश्वर ने यीशु ने फारिसियों को देखकर कहा है कि तुम्हारा कटोरा जो है बाहरी रूप से अच्छा पेंट किया गया, चमकता है, पर भीतरी रूप से खराब है। What kind of people are they? They clean the outside, किस तरह के लोग हैं? वे बाहरी रूप से साफ करते हैं, but inside they say, well, we're going to pour something into it so nobody is going to see what's inside, just pour some coffee or something in it. Nobody's going to look तो वो कहते हैं inside. कि कौन देखने वाला है, बाहर से तो साफ है, भीतर हम कुछ डालने वाले, कौन देखने वाला That's है? their kind of philosophy. यही उनकी It फिलॉसफी must है। look shining on the outside. बाहरी रूप से चमकना चाहिए, It must look good on the outside. बाहरी रूप से दिखने में अच्छा होना See, चाहिए। that's the nature. That's what got them into trouble. That is why, even though they received the word with gladness, they failed to reap a harvest. यही समस्या है कि वे अच्छी कठिन नहीं काट पा रहे हैं, बाहर से देखने में तो अच्छे हैं, आनंद से ग्रहण करते हैं, पर अच्छी फसल नहीं काट पाते हैं। And the root is the thing that bears up the tree, not the tree the root. क्योंकि जड़ ही जो है पेड़ को पूरी तरह से सहता है, पेड़ जड़ को नहीं सहता। And the Bible says so in Romans chapter 11 verse 18. It says it so as a principle. The root is the thing that bears the tree, not the tree the root. परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, रोमियो के पत्र 8वें अध्याय में देखते हैं कि जड़ ही जो पेड़ को संभालता है, पेड़ जड़ को So a नहीं। lot of times people don't understand that the root is so important. It needs to be strengthened. The foundation is so बहुत सारे important. लोग ये नहीं समझते हैं कि जड़ ही बहुत जरूरी है, उसको बल देना चाहिए, उसे साहस देना चाहिए। They're more concerned about how do we look on the वे outside. इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि बाहर से हम कैसे What are we दिखते going to हैं। wear for the church today? मैं आज कलीसिया के लिए क्या पहनने वाला हूँ? Am I looking just right? मैं बिल्कुल ठीक दिखता हूँ क्या? That's all right. You look good. Nobody's saying बहुत anything. अच्छी बात है, बाहर से अच्छा दिखो, कोई But गलत we're नहीं going to कह come रहा, out in public. We don't want to scare anybody. क्योंकि हम पब्लिक में आते हैं, किसी को डरा नहीं देना चाहिए हमें, So we want to look good also. तो हमें अच्छा दिखना भी चाहिए। But the thing is, our inside is very पर important. बात यह है कि हमारा भीतरी व्यक्तित्व अच्छा होना When we चाहिए। come to church, we are not dealing with your outside. We are dealing with the inside. जब कलीसिया में आप आते हो तो आपके ऊपरी तौर को देखकर हम कुछ नहीं करते हैं, भीतरी चीज को ठीक करना चाहते In हैं। the church, we are dealing with truths that will change the inside. कलीसिया में जो ऐसी सच्चाइयां हम बताते हैं जो तुम्हारे भीतरी व्यक्तित्व को बदल That डाले, is why we are in the church. इसलिए हम कलीसिया में हैं। But a lot of people are just mostly live their life to be seen well on the पर outside. बहुत सारे लोग जो है बाहरी रूप से ही अच्छा दिखना चाहते हैं, भीतरी में कोई बदलाव नहीं लाना चाहते। Jesus dealt with it in the Sermon on the Mount. He said, people give alms to be seen. देखिए, यीशु ने जो पहाड़ी उपदेश में सिखाया तो उसने कहा कि फरीसी लोग ऐसे करते हैं, जब दान देते हो सबके देखने लायक देते That's हैं। why they, blow the trumpet and call everybody and say, we are going this many, giving this many saris and dhotis and everything जब वो कुछ today. दान करते हैं तो तुरंत जो तुरी बनाकर सभी लोगों को इकट्ठा करके बोलते हैं कि हम इतना धोती देने वाले, इतने साड़ियां देने वाले हैं। He says they are calling everybody's वे attention. कहते हैं कि सबका ध्यान उन पर मुड़ने के लिए ऐसा They are करते हैं। doing, not to be doing it, they are doing to be वे seen. इसलिए नहीं कर रहे हैं बल्कि दिखावे के लिए कर रहे And हैं। even those who fast and pray, they do it like that, it seems. और जो उपवास करके प्रार्थना करते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। So if you're fasting, you don't want to look too good. You want to look very sad and very, that like you've never had any breakfast today and all of that, So people look at you and say, oh boy, it looks like, you haven't had anything to eat. देखिए, अगर आप उपवास कर रहे हो तो बिल्कुल दुबले पतले दिखते हैं, बिल्कुल थके हुए दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे तुमने खाया नहीं क्या 3-4 दिनों से, ऐसा दिखावा दिखाते हैं। Okay, but that's another story. वो दूसरी कहानी है, बात नहीं करना चाहता। You think about that and meditate on that and come to your own conclusions. आप उसके बारे में सोचिए, ध्यान कीजिए, कुछ नतीजे One man पहुंच said to जाइए। me, I am fasting all the time for 40 days, once or twice every year. एक आदमी ने कहा कि मैं हर वक्त उपवास करते रहता हूँ, साल में 1 या 2 बार उपवास कर देता And हूँ, he's so big. पर वो इतने मोटे हैं। If I fasted for 40 years, this year, man, for the next 10 years I'll be thin. अगर मैं इस साल उपवास करूँ तो अगले 10 साल तक मैं पतला ही रहूंगा। I think maybe that's a gift of God that you get fat when you get fasting. पर देखिए, ये परमेश्वर का वर है, उपवास करते हो तो और मोटा होता तो अच्छी बात है। I don't know what to think, whether they're fasting or feasting or I don't मुझे know. नहीं मालूम वो फास्टिंग करते हैं या फीस्टिंग करते हैं, क्या कहूँ मैं उस बात But पर बात यह है, the thing is, they do a fasting makeup. पर वे एक फास्टिंग मेकअप करते हैं, So they are seen to be fasting. तो वे दिखावे के लिए उपवास करते रहते हैं।
Jesus said that's not right. You don't get any benefit from it. You don't get any result. Your fasting doesn't bring any result at all. यीशु कहता है उससे कोई लाभ नहीं है, आपका उपवास कोई भी उपयोगी बातें नहीं लेकर आने Now, वाला। how would you like to fast and get no result? देखिए, अगर आप उपवास करते रहो उससे कोई नतीजा न मिले तो कैसा लगेगा? Because fasting must bring at least good results for yourself. उपवास जो है कम से कम अच्छे नतीजे कम से कम आपके लिए होने चाहिए, But no result. पर कोई नतीजे नहीं आते। Why? Because the attention is for the outside and not on the inside. क्योंकि ये पूरा ध्यान जो बाहरी रूप से, भीतरी रूप से कोई ध्यान नहीं The है। root is rotten. जड़ जो है पूरी तरह से सड़ गया It's है, completely decayed and it is not conducive to growth and increase and fruit पूरी तरह से bearing. जड़ सड़ गया है, बढ़ने लायक नहीं है, उसमें कोई पोशाक दिलाने लायक नहीं है, पूरी तरह से सड़ चुका है। हेलो, Because the root is decayed, it cannot bring forth good fruit. जड़ सूख जाने के कारण जो है अच्छे फल वो नहीं ला सकता है। So the root system must be good. तो ये जड़ का जो सिस्टम होता है वो अच्छा होना चाहिए, So that when persecution and affliction arises, you are not immediately put off by जब it. कोई पीड़ा या परेशानी समस्या आए तो आप ठोकर न खा Now, पाओ। affliction and persecution arises for the word's sake. देखिए, वचन के कारण जो है उपद्रव और क्लेश आते हैं। Now, a lot of Christians don't look at it like that. बहुत सारे लोग, ईसाई लोग उसे ऐसे नहीं लेते They हैं। think affliction and persecution God has sent. वे सोचते हैं कि क्लेश और उपद्रव जो परमेश्वर ने भेजा है। Doesn't God have anything else to do? क्या परमेश्वर के पास कुछ और नहीं है ऐसा करने He's के लिए? sending affliction and persecution. They क्या think. वे सोचते हैं कि उस वही जो है क्लेश और उपद्रव भेज रहा है? No, नहीं, affliction and persecution comes as because the devil wants to take away the word. That's one of the ways he takes away the word. that was क्लेश और sown. उपद्रव इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान ही वो आता है, क्योंकि बोया गया वचन वो वहां से ले लेना So चाहता है। whenever affliction or persecution comes, you need to realize, well, it's come to take away my faith, take away my word, so that I can't enter into my success and my increase, so that my harvest will not happen for me. It's come to ruin my harvest. I must stand. I must take the जब जब victory. in क्लेश this. या उपद्रव आता है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मेरे अंदर बोए गए वचन के लिए शैतान ने जो ये सब भेजा है, तो मुझे इसे नहीं गंवाना चाहिए। मुझे अपने वचन पर खड़ा होना चाहिए, विश्वास पे खड़ा होना चाहिए, साहस पूर्वक खड़ा होना चाहिए, वचन को नहीं खोना Amen? चाहिए। But आमीन। for that, the root system must be इसलिए strong. जो है जड़ का जो सिस्टम है बहुत बलवान होना If the चाहिए। root system is not strong, जब रूट सिस्टम जो है बलवान नहीं होता then the tree doesn't get a good feeding. और जब पेड़ को जो है अच्छा खाना नहीं मिलता, And so they spring forth with nothing more than just leaves सिर्फ उस पेड़ में जो है पत्तों के अलावा कुछ और नहीं and होता, produce no fruit. उसमें कोई फल जब नहीं आते। Now, what does the root system consist of? तो ये जड़ का जो सिस्टम है उसमें क्या बातें बसी हुई हैं? Let me talk about the root and what does the root consist of? What do we call the root and what is that problem? जड़ really? के बारे में बात करते हैं। जड़ में ऐसी क्या बात है, उसमें क्या समस्या है? How do we strengthen the root जड़ को कैसे आप बलवान बना सकते हो so that the tree can bear fruit? ताकि वो वृक्ष जो है अच्छे फल दे सके? Have you ever seen some trees? I've seen some trees in some countries where they have to keep a stick under the branch to hold up the thing because it's having so many fruit. मैंने ऐसे वृक्षों को देखा है, कुछ देशों में देखा है कि उस पेड़ों के नीचे जो लकड़ियां रख देते हैं, बड़े बड़े लकड़ियां, The branches are having so many fruit that they give a stick from the ground up and उसकी hold the डालियां जो branch इतनी up. झुक जाती हैं फलों के कारण, इतने फल होते हैं कि पूरी ढाली नीचे झुकी हुई Because होती है। it's yielding to the maximum. It's working good. Somebody is paying a lot of attention to everything and so it's working बहुत good. ही ज्यादा फल वो दे रहा है, अधिकतम रूप से फल दे रहा है, क्योंकि जो है किसी ने उसके जड़ में अच्छा And काम किया है। there you see also some trees that have only leaves that look pretty but have no fruit. और कुछ ऐसे भी पेड़ हैं दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, सिर्फ वहाँ कोई फल नहीं है, वहाँ सिर्फ पत्ते होते A हैं। lot of Christians are like that. बहुत सारे ईसाई ऐसे ही हैं, Leafy Christians. पत्तों से भरे हुए ईसाई, Well decorated. They look like a Christmas tree. बहुत ही अच्छे अलंकृत होते हैं, क्रिसमस ट्री की तरह होते हैं, But no fruit. और कोई फल नहीं है। You know, it's basically dead and it can't produce any fruit because the root is a problem and no feeding is there, so it can't produce any बुनियादी fruit. तौर से देखा जाए तो मरा हुआ वृक्ष है, सिर्फ पत्ते हैं, वहाँ कोई फल नहीं है, जड़ मरा हुआ है, कुछ खाना उससे So नहीं मिलता है। what does the root problem consist of? जड़ की समस्या में क्या बातें बसी हुई हैं? The root system consists of basically, first of all, a thorough knowledge of Jesus Christ. जड़ के सिस्टम में जो है मुख्य बातें ये होती हैं कि यीशु मसीह के बारे में एक सही रूप से ज्ञान होना चाहिए। Getting to know Jesus. यीशु मसीह को उन्हें जान लेना चाहिए, You know, that is very important. वो बहुत जरूरी है।
That is the foundation for life. वही जो जीवन की बुनियादी बात है। You know, what he has done, what has come to me as a result of what he has done, what has he given to me, what the new covenant means to me, what has the redemption brought to me, all of these उसने things are क्या important. किया है, उसके करने के कारण मुझे क्या हुआ है, सूली में क्या हुआ है, नए वाचे ने मेरे लिए क्या किया है, ये सब बातें मैं जान लेनी A चाहिए। thorough knowledge of the person and the work of Jesus Christ and what has happened as a result to me. यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी क्रियाओं के बारे में, उसके व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में, जो उसने किया उन सब के बारे में सही ज्ञान होना See, चाहिए। that is an important part of the health of the root. देखिए, जड़ के आरोग्य के लिए बहुत ही मुख्य बात यही You है। know, if you don't concentrate on that, I'll tell you, small troubles will upset you big time. अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो छोटी समस्या बहुत बड़ी समस्या दिखेगी। But when you pay attention to this, always Jesus seems bigger than any पर problem. जब आप इस पे अपना ध्यान दिखाओगे तो आपको अच्छी तरह मालूम चल जाएगा कि यीशु ही सबसे बड़ा है, समस्याओं से बड़ा You है। know, whatever the problem is, you immediately say, God is जो कोई good. भी समस्या आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी हो, तुरंत आप कहोगे कि परमेश्वर मेरे लिए भला Situation परमेश्वर may है। be bad, some people may be bad, and the problems may be really, terrible, but the Lord is good. परिस्थितियां बुरी हो सकती हैं, कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, बहुत ही बुरी हालत हो सकती है, पर परमेश्वर भला परमेश्वर है। Jesus is good and he is great. यीशु भला है और वो महान है। There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and low. Fear not, I am with thee. Peace be still. In all of life's ebb and flow. Jesus, Jesus, Jesus. Sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Jesus, Jesus, Jesus.